This purpose, I would like to invite Muntahab Classics. ये एक गेट टुगेदर कर पाए हैं जब आपने ऐसा काम सर अंजाम दिया यहाँ पर हम who have been with us for a long time. Chairman sir, Mr. पूरी कश्मीर वैली में 7वीं पोजीशन और 8वीं पोजीशन आप जानते हैं हमारे स्कूल I'm Ansar Raza. I had done my class 10th from HKMC Educational Institute, Manigam, Gadarabal. First of all, I am very thankful to the Almighty God who bestowed me with such good grades, and after that I am also very thankful to my parents who supported me a lot during my studies. And I am also very thankful to my dedicated, experienced teachers of this institution who worked hard and not only taught us but guided and encouraged us in every step of our life. Achievement goes to our beloved chairman sir and principal sir who provided a lot of facilities and such great staff members. At last, my advice to the junior students will be that work hard to get a fruitful future. Shahid. Recently, I scored 491 marks out of 500 in class 10th examinations. Firstly, I am thankful to Almighty Allah and then my teachers and my parents who supported me a lot. And I request juniors to hard work and score very good marks in upcoming examinations. Name is Muhammad Fahim Bhatt. I was studying in this institution, namely HKMC Educational Institute. I am thankful to Almighty Allah and to my parents who supported me always, and also to my teachers who were always with me during my preparation times. My message to students, past students, is that to achieve goal in life, hard work is important. आज हमारे स्कूल की फेलिसिटेशन सेरेमनी थी. हमारे 5 स्टूडेंट्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अच्छे मार्क्स से पास किए हैं. हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जो लोगों ने 7th पोजीशन पूरे वैली में, 8th पोजीशन एंड 9th पोजीशन हासिल की है. और जो ये मुबारकबाद मैं हमारे बच्चों को देना चाहता हूं और हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन लोगों की मेहनत की वजह से हमारे बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है. पहले भी हमारे स्कूल ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई. हमेशा हम 100% रिज़ल्ट दिया करते हैं और इंशाल्लाह हम हमारी जो फ्यूचर में भी हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे आगे भी तरक्की करते रहेंगे और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे.